Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the basic steps towards the automation strategies to increase the efficiency of any manufacturing system, as well to increase the productivity of the labor. Because for sure, let me first start the presentation so that you can easily see the text. So you can look into the first bullet, which states that the main objective of designing a manufacturing system is to increase the manufacturing efficiency and labor productivity. So whenever you will be designing a manufacturing system for certain scenario, so you will have to look into these two parameters: the productivity of the labors and the manufacturing efficiency. And these are the three entities that plays an important role in increasing both the efficiency as well the labor productivity of the system. So in the hierarchical order, it starts from the tools, then the next step is mechanization, and third one is automation. So tool, you all know that it is basically the extension of the human hand which performs the effective action. There are certain operations that normally are performed with the help of hand tools, and the operator or the worker basically uses that tool to give shapes to the workpieces. There are certain cutting operations that can be performed, bending operations that can be performed, joining operations that can be performed manually using the hand tools. So tool is basically that initial entity which performs the effective actions. Like for example, the welding process. In the welding process, the electrode is basically the tool that you use, and the electrode performs the effective action, that is the joining procedure. Similarly, like in lathe machines, you have single point cutting tools. So the tool tip basically performs the effective actions. It removes the material from the workpieces. And in case of manual operations, the worker uses some hand tools, and control of the whole operation is with the worker himself. He also applies the cutting forces. He also controls the movement of the tool. The best example that I can give you is the example of the fitting shop that you have performed in workshop technology practice in the first year. So next step is the mechanization, and mechanization is basically the machines, if they are used to perform the actions that were initially performed by the worker himself. In simple words, I can say that if you take the hand tool from the worker and attach those tools to the equipments, to the machines, so that technology, technically it is known as mechanization. So in manual operations, the effective action is performed by the tool. However, the cutting forces that will be required to remove the material or to bend the material or to perform some other task, those forces are applied by the worker himself. Similarly, the control of that tool, for example, if you want to perform the filing operation or cutting operation with the help of hacksaw or some other operation, so the movement of the tools, that is the control part. So that movement is also controlled by the worker. So in case of manual operations, the physical labor and the mental labor both comes from the worker side.
And if we attach those tools to the machines, so the physical forces that will be required to remove the material or to bend the material or some other operations, that will come from the mechanism. Mechanism means that will come from the machines, like lathe machines. So if you want to move the tool longitudinally, so it will perform the plane turning operation. So for plane turning, the cutting forces will come from the equipment itself. However, the control of that longitudinal movement is still with the worker. The worker will control basically the movement, the feed rate, the depth of cut of the machine. So that technology, technically, it is known as mechanization. So mechanization, as far as in simple word is concerned, so it is the replacement of human physical labor by the machine. So the physical forces that will be required to cut the material, it will come from the mechanism. However, control of that mechanism is will be with the worker. So when you compare them, so tools basically is used to increase the efficiency of the operation. Efficiency means the labor productivity of the worker. And if you attach those tools to the machine tools, so you can further increase that efficiency and you can reduce the manufacturing time. The third step is the automation. So automation is basically a replacement of the human mental as well as the physical activities. मैकेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो फिज़िकल फोर्सेस है वो तो मैकेनिज़्म की तरफ से आती है, लेकिन कंट्रोल जो है वो वर्कर के पास होता है. And if we take that control part from the worker and give it to the machine, so it will become an automated machine. वो एक automated machine बन जाएगी. तो third step is the replacement of the human mental labor by which by the machines. So इसका मतलब ये है कि जो machine setups हैं, जो tool changes हैं, all those moves will be automatically performed by the equipment itself. And the example is the CNC machines. So in CNC machines, you only need to load the program, and then accordingly, it will change the tools, whatever tool is required. It will select the feed rates and depth of cuts from the program. Automatically, all those operations will be performed, and the role of the human worker in case of the full-fledged automated system is only at the supervision level. So that is the third step. So if you want to compare mechanization with automation, so mechanization is the replacement of human physical labor by machines. However, control of those machine operation will be affected by the human operator. And as far as the automation is concerned, it also replaces this controlled action by the machine themselves. So simply it means that the replacement of both human physical and mental activities. This is a book definition. ग्रूअर में अवेलेबल है. डेफिनेशन तो नहीं है. ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन के रेफरेंस से थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है. ऑटोमेशन जो है इट इज़ मोर फोकस्ड अराउंड द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग दैट रिप्लेसेस द ह्यूमन लेबर विद द मशीन्स. और मैकेनाइजेशन ये है कि इट इज़ बेस्ड अराउंड बेसिकली ऑन द इक्विपमेंट, ऑन द मशीनरी which adds in increasing the productivity of the labor with reference to the accuracies, with reference to the speed of the operations. All those equipments that are controlled by automation strategy, meaning that the machines which are controlled by computer softwares, technically they are known as mechatronic equipments. So mechatronics basically plays an important role in automation strategies.
And you all know that mechatronics is an integrated form of mechanisms and computers. So, means unification of mechanics, the machines, with reference to physical labor, and the electronic circuitry, which are basically the computers, and that is with reference to the mental activity. And this is the definition that is available in the Brewer book. Uh, it is again a general statement that automation is the technology by which a process or procedure is accomplished without human assistance. Without human assistance means without human physical as well as the mental activity. So, when we talk about a mechatronic equipment, so how it will be implemented within the system. So, definitely you will be requiring some program, and that program will be made by you, and you have to execute that program. So, it will be implemented by using a program of instructions. Uh, Later on, it will be combined with a control system which will execute those instructions. And of course, you will need power to drive that particular process with the help of the program. So, with reference to that, we can then identify the three elements, three basic elements of any automated equipment or system. So it is with reference to both the system as well as the equipment. So you will need a power source, and then of course you will have to make the program for the equipment, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम का होना ज़रूरी है. सो पावर इज़ बेसिकली टू accomplish द प्रोसेस एंड टू ऑपरेट द सिस्टम. प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो डायरेक्शंस होंगी जो आप इक्विपमेंट कंट्रोल करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है ना. सो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ बेसिकली टू डायरेक्ट द प्रोसेस, and then you will have the electronic circuitry, the control system, which will actuate those instructions that will be available in the program. Yeah, so it is a block diagram that shows these three basic elements. So you will have a power supply, and whenever you will switch on the equipment, so you have to load the program. That program will be interpreted by the control system, and then accordingly it will direct the equipment to perform certain operations. और वो certain operations जो है वो feedback system के through ही perform होंगी, normally होती है. So you will have different sensors attached to each individual entity of the machine. Entity means different slides will be there, and to each slide a sensor will be attached, and whenever that sensor receive any signal from the control system, so it will actuate that particular slide, चाहे वो क्रॉस स्लाइड हो, चाहे वो स्पेंडल स्पीड हो, चाहे वो कूलेंट ऑन ऑफ हो, whether it is a tool change, etc. So this is a block diagram which shows these three basic elements of any automated equipment. So once you are familiar with the steps, that what could be the possible parameters that you can use to automate the system, so then you must also know the different the different kinds of automation strategies that you can implement on the system. So, for a strategy, you must then also know the type of production facility. ये प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है, ये जो सेटअप है, ये किस टाइप का है, और उस टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आप एक ऑटोमेशन स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करना चाहेंगे. सो
basically to identify the type of production system. Again, you have to go back to the basic diagram. So this is that initial figure which I was referring for. So you have to go back to this particular figure. You have to identify basically the directions in which you can implement the automation strategies. So overall, when we look into the production system, either this figure or this one, so it is a more detailed form. So I will emphasize on this basic figure, which shows basically the two blocks of or two levels of any manufacturing system. So they are basically the two directions in which you can go for. So a production system, as you know, that it consists of a manufacturing support system and facilities. Manufacturing support system is normally associated with the management philosophy और जो physical operations आपको मिलती है at the factory level, it is this one. So these are basically two directions in which you can adopt automation strategies. And definitely the automation strategy that you will implement on the upper level will be different from the strategy that you might be using to operate the factory operations. So keep this particular figure in mind. So if you look into the production system, you can clearly see two directions in which you can go for the automation. So let me go back to the actual slide. This one. So overall, you have two directions in which you can go for automation. One is the manufacturing support system and other is the factory. And within the factory, then you can further have two directions. You can have automated flow type production and you can have continuous type of production. फ्लो टाइप प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कहते हैं और जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है नॉर्मली दोज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज which processes the raw material in gaseous form or liquid form. So they are also called processing industries. So overall आपके पास जो फैक्ट्री की टाइप्स हैं वो दो हो सकती है. You can have a manufacturing industry, you can have a processing industry. So within the second level, that is the facility level, you can have these two directions. So overall, we can say that we have three directions in which we can go for the implementation of any automation strategy. एक तो जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रही है इंक्रीज इन द बिजनेस एफिशिएंसी मींस ये जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए एक ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली यू विल बी यूजिंग सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. एंड फिज़िकली आपको जो ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी वो फैक्ट्री लेवल पे चाहिए होंगी. एंड एज फार एज द फैक्ट्री इज़ कंसर्न, सो यू कैन हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड यू कैन हैव प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. तो फॉर श्योर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इन विच फिजिकली द रॉ मटेरियल गोज फ्रॉम one section to another section or from one machine to another machine, the strategy will be totally different from a scenario in which you will have a continuous type of production in which the raw material will be in continuous form throughout the production process. So right from the inlet to the outlet of the system, there will be no discontinuities among the flow of the raw material, जो कि नॉर्मली प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आपको नज़र आती है.
जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है या शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है. सो देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज़ in which the type of production is continuous type of production. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होती है उसको फ्लो टाइप प्रोडक्शन भी कहते हैं एंड दे आर आल्सो नोन एज discrete type of production. Discrete production means that individual parts will be manufactured on individual equipments. And when, for example, if you have a raw material, so first it will be processed on certain equipment, then you will have to unload that part from the equipment and transport it to some other section or other equipment. वहाँ पे आप load करेंगे and then that machine will start processing the part. So there will be disruptions, there will be discontinuities in between two processes or in between two operations, you can say. So that type of manufacturing strategy is known as discrete type of manufacturing, in which there will be discontinuities of the raw material while it moves from one station to another station. सो ओवरऑल आपके पास ये तीन डायरेक्शन जो है बन जाती हैं जिस पे आप ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. And these tendencies then created these three types of automation that you see in the lower bullet. फ्लो टाइप डिस्क्रीट टाइप मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की जब आप बात करते हैं तो उसमें जो ऑटोमेशन स्ट्रेटजी होगी दैट विल बी मैकेनिकल ऑटोमेशन. उसको मैकेनिकल ऑटोमेट बिकॉज मैकेनिकली यू विल ऑटोमेट द इक्विपमेंट्स. उसमें जो कन्वेयर सिस्टम यूज़ हो रहा है, जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हो सकती हैं, ओवरहेड क्रेन्स हो सकते हैं. सो देयर आर सो मैनी इक्विपमेंट्स दैट यू कैन यूज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है दैट विल बी मैकेनिकली ऑटोमेटेड. जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उस इक्विपमेंट को मैकेनिकली आपने ऑटोमेट करना होगा. जो लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशंस हैं उनको आपने मैकेनिकली ऑटोमेट करना होगा. सो यू हैव मैकेनिकल टाइप ऑफ ऑटोमेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जो ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करते हैं उसको प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं. ठीक है, बिकॉज यू विल हैव टू ऑटोमेट द प्रोसेस, नॉट द इक्विपमेंट. आपने प्रोसेस को ऑटोमेट करना होता है. एंड थर्ड टाइप of automation strategy is known as business automation, और उसको ऑफिस ऑटोमेशन भी कहा जाता है, जो कि अपर लेवल पे आप अप्लाई करेंगे. ये दो टाइप ऑफ ऑटोमेशन जो है मैकेनिकल ऑटोमेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन, दे बिकॉज दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री, तो इसको फैक्ट्री ऑटोमेशन भी कहा जाता है. So mechanical automation or process automation are known as factory automation. So if there is a term with the name factory automation in the book or literature में आप कहीं देखते हैं, so factory automation will either refer to manufacturing industries or processing industries, meaning mechanical automation or process automation. फैक्ट्री ऑटोमेशन की जब आप बात करते हैं तो उसमें मैकेनिकल और प्रोसेस ऑटोमेशन आ जाती है. ठीक है ना. सो यू हैव मैकेनिकल एंड प्रोसेस ऑटोमेशंस दैट आर मेनली कंसर्न विद द डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस व्हिच नॉर्मली कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स. और ये कन्वर्जन का प्रोसेस जो है, ये अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल, जो टेक्निकल प्रोडक्शन होती है. सो दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन, जो प्रोसेसेस को अगर आपने ऑटोमेट करना हो या मैकेनिकली एक इक्विपमेंट को आपने ऑटोमेट करना हो तो उसको फैक्ट्री ऑटोमेशन कहा जाता है. एंड एज फॉर एज द ऑफिस ऑटोमेशन कंसर्न, एज आई सेड दैट इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन. सो मैनेजमेंट फंक्शंस को अगर आप ऑटोमेट करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ सम computer softwares to increase those productive activities, तो वो ऑफिस ऑटोमेशन है. और ऑफिस ऑटोमेशन को अगर आप देखते हैं तो इट इज़ होली सोली एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन फ्लो.
ठीक है ना। सो फ्लो ऑफ मटेरियल था और एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, अगर आपको याद हो जो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़े थे। सो फ्लो ऑफ मटेरियल की जो ऑटोमेशन है उसको फैक्ट्री ऑटोमेशन कहा जाता है, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की ऑटोमेशन है उसको ऑफिस ऑटोमेशन या बिजनेस ऑटोमेशन का नाम दिया जाता है। एंड व्हेन यू इंटीग्रेट दीज टू, अगर आप यानी एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो व्हेन यू इंटीग्रेट द फैक्ट्री ऑटोमेशन विद द ऑफिस ऑटोमेशन, सो उसको फिर इंटरप्राइज लेवल ऑटोमेशन कहा जाता है या कॉरपोरेट ऑटोमेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। सो बहुत सी आपने इंडस्ट्रीज़ देखी होंगी या नाम सुने होंगे कि दे आर कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ और इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज़। तो अगर कॉरपोरेट लेवल पे आपके पास ऑटोमेशन हो या इंटरप्राइज लेवल पे आपके पास ऑटोमेशन हो, तो उसको फिर कॉरपोरेट ऑटोमेशन या इंटरप्राइज लेवल ऑटोमेशन कहा जाता है, ठीक है ना। और कॉरपोरेट इंटरप्राइज जो है वो फैक्ट्री ऑटोमेशन और ऑफिस ऑटोमेशन का मर्ज्ड फॉर्म है, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म है। So these were the three basic directions in which you can implement the automation strategies. Our main emphasis will be on the फैक्ट्री ऑटोमेशन, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो कोर्स के कंटेंट्स है दे आर रिलेटेड टू द फिजिकल प्रोसेसेस एंड operations that are involved or that will be involved in setup. So as far as the factories or the mechanical type of automation या process type of automation की आप बात करते हैं, तो further now you can categorize them in two basic levels of automation, जिसको लो लेवल ऑटोमेशन कहा जाता है, यानी लो कॉस्ट ऑटोमेशन भी कहा जाता है और एक्सटेंडेड ऑटोमेशन भी कहा जाता है, हाई लेवल ऑटोमेशन भी कहा जाता है। सो लो लेवल ऑटोमेशन की जब आप बात करते हैं, तो एज द नेम इम्प्लाइज दैट इट विल बी एट द लोवेस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल मीन्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसमें आप इंडिविजुअल ऑपरेशन जो है या इंडिविजुअल मूव्स जो है वो आप ऑटोमेट करना चाहे, तो यू कैन ऑटोमेट दैम। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल केस ये है कि if there is a work piece which is residing on the conveyor belt, और आप उस कन्वेयर बेल्ट से वर्क पीस उठा के मशीन पे लोड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन इंडिविजुअल एक्टिविटी, वन इंडिविजुअल ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को अगर आप ऑटोमेट करना चाहें तो यू कैन ऑटोमेट दैम। या सिंपली फॉर एग्जांपल जो कन्वेयर बेल्ट है, फॉर एग्जांपल आपने वर्क पीस जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे लोड कर दिया है, ठीक है ना। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट एंड यू वांट टू मूव दैट वर्क पीस ऑटोमेटिकली टू सम अदर इक्विपमेंट, यू कैन ऑटोमेट दैट। और ये सिंपल ऑटोमेशन है, यू कैन सिंपली ऑटोमेट इट विद द हेल्प ऑफ अ टाइमर एंड एक्चुएटर। ये एक सेंसर और एक्चुएटर के थ्रू जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। And these types of automated equipments are cheaper, they are easily available in the market। उसके लिए कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं होती। सो लो लेवल ऑटोमेशन वो ऑटोमेशन है जो कि नॉर्मली एम्फेसाइज करती है स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोमेटिक इक्विपमेंट में, जिस पे एक्चुएटर्स आ जाते हैं, सेंसर्स आ जाते हैं, टाइमर्स आ जाते हैं, जो लॉजिक गेट्स हैं वो आ जाती है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू वेरी मच लो एज कंपेयर टू द अदर strategies that we will study. So low cost automation basically is automation with a small amount of capital, and this emphasize on standardized automatic equipment that you can easily use. It is useful for small businesses, for small setups, for small individual processes, operations. And normally, when you automate any activity with the help of those standard automatic equipment, this means that it will be a dedicated type of automation strategies which will only be used for that specific scenario। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पिक एंड ड्रॉप के लिए या फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक मूव के लिए आपने ऑटोमेट करना हो, तो
तो उसमें अगर आप एक्चुएटर या सेंसर यूज़ करते हैं, और इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्चुएटर और अ टाइमर, so that will only be dedicated to that specific scenario. If you change the sequence of process or change the sequence of operations, so it will not work then, वो उसके लिए काम ही नहीं करेगी. तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि लो लेवल ऑटोमेशन अगर स्ट्रेटजी आप जो है वो अडॉप्ट करना चाहें, so this can only be adopted to those systems which will make similar type of products, यानी जिसमें आपका प्रोसेस और आपके जो ऑपरेशंस होंगे उनका सीक्वेंस जो है वो अगर चेंज ना हो, तभी ये जो है आपके पास कारामद होगा. And this is the scenario which normally we call as mass type of production. सो लो लेवल ऑटोमेशन जो है वो सिर्फ मास प्रोडक्शन के लिए ही यूज़फुल है. मास प्रोडक्शन जो है जनरली आर दोज सेटअप्स विच कंटिन्यूसली मेक वन सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दैट इंडस्ट्री. So cost effectiveness is very great when we talk about low level automation. But the main disadvantage that is associated with low cost automation or low level automation is that you can only use uh, this type of strategy to mass production. अगर बैच प्रोडक्शन है या जॉब शॉप प्रोडक्शन है, तो टोटली उसके लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो एक फेल्ड स्ट्रेटजी तस्वुर होगी. बिकॉज इफ़ यू वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन तभी चेंज होगा इफ़ यू स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टाइप टू some other product type. So definitely the number of operations, the number of process will be totally different from the previous scenario. So उसके लिए आपने फिर फिजिकली वो ऑटोमेटेड इक्विपमेंट जो है वो डिसमेंटल करना होगा, और किसी और सिनारियो के लिए फिजिकली आपने हार्डवेयर में चेंजेस करनी होंगी बेसिकली, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्शन. सो लो लेवल ऑटोमेशन स्ट्रेटजी जो है इट इज़ ओनली applicable in case of mass type of production, where one type of product will be produced continuously. So these are examples of some low level automation strategies. For example, ये bottle filling का एक example है, in which you can control the movement of that conveyor belt through a simple timer. एक टाइमर आप लगा दें जो कि स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है मार्केट में, एंड यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट. आप टाइम सेट कर सकते हैं, फॉर दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम द बॉटल विल बी मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 स्टेशन हैं आपके पास, लोडिंग और अनलोडिंग. लोडिंग स्टेशन है, रादर 4 स्टेशन है. फर्स्ट इज़ द लोडिंग स्टेशन. सेकेंड स्टेशन जो है वो बॉटल फिल कर रहा है उसमें लिक्विड, और थर्ड स्टेशन जो है इट places the cap on top of the bottle, और fourth station जो है वो आपका unloading station है which removes the bottle from that. So you can individually automate those simple operations through the use of standard automatic equipment. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बॉटल का आप साइज़ चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली यानी वॉल्यूम इन लीटर्स अगर आप देखते हैं तो इट विल बी डिफरेंट. तो फिर वो टाइमर जो है वो आपने चेंज करना होगा, ठीक है ना. तो ये छोटे चेंजेस जो है वो आप कर सकते हैं, यानी आप दोबारा सेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने पूरा सीक्वेंस ही चेंज करना हो, तो फॉर दैट देन यू विल हैव टू फिजिकली रिमूव ऑल दोज सेंसर्स और टाइमर्स फ्रॉम द इक्विपमेंट्स, और किसी दूसरे सीक्वेंस के लिए आपने दोबारा फिजिकली उसको हार्डवेयर जो है वो सेट करना होगा. सो दिस इज़ अनदर ऑपरेशन. स्प्रेइंग ऑपरेशन जो है पेंट का वो शो हो रहा है, ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं. मोल्डिंग मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है. सो यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ दैट spiral to move basically the heated material, the molten material into the mold.
ये वही ऑपरेशन है, एक दूसरी स्ट्रेटजी जो है इस पे है, मल्टीपल बॉटल जो है वो फिल हो रही हैं, तो ये इंडिविजुअल ऑपरेशंस है. सो ऑपरेशंस लाइक दैट कैन बी individually automated through the use of standard automatic equipment with low costs, and it greatly will increase the labor productivity as well as the efficiency of the system, as well the accuracy of the process and operations. पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो है ज़्यादातर इसका यूज़ आपके पास अवेलेबल होगा. एयरपोर्ट्स में अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, सो सॉर्टिंग मशीन नॉर्मली आपका जो लगेज होता है, ठीक है ना, सो उसको टैग कर दिया जाता है, एंड देयर इज़ स्पेसिफिक बार कोड अटैच टू दैट टैग, और सेंसर्स लगे होते हैं, एंड बेसिकली द सेंसर, लेज़र सेंसर भी होते हैं, कॉन्टैक्ट सेंसर्स भी होते हैं, कैमरा सेंसर्स भी होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स भी होते हैं. सो बेसिकली इट रीड्स द बार कोड, एंड देन accordingly it directs the conveyor to move that particular luggage to any of the conveyor. वही बॉटल फिलिंग का ऑपरेशन है. तो लो लेवल ऑटोमेशन जो है वो मास प्रोडक्शन में ही आप यूज़ कर सकते हैं. And other type of automation is the extended type of automation or high level automation. Definitely, it will need huge amount of capital if you want to extend the automation strategy to each and every, you can say, parameter of the industry or entity of the industry. सो एक्सटेंडेड ऑटोमेशन में आपका आपका जो यानी जो डिज़ाइन ऑटोमेशन है, यानी जो कैड सिस्टम्स आप यूज़ करते हैं वो भी आ जाते हैं, जो लेबॉर्ट्री ऑटोमेशन है वो भी आ जाती है, यानी जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है, और जो स्टोर्स और सेल्स ऑटोमेशन है वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं. और फैक्ट्री जो है इट इज़ द इंटीग्रल कंपोनेंट, यानी जो आपका हार्डवेयर सेटअप होगा, जिसमें आपके पास कन्वेयर सिस्टम होता है, लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन होते हैं, और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं. तो ज़ाहिर है उनको भी आपने ऑटोमेट करना होगा. सो दैट टाइप ऑफ ऑटोमेशन in which if you want to automate the equipments plus the loading and unloading stations, उसके साथ आप जो material handling system है अगर वो भी आप automate करना चाहें, and then if you want to integrate those systems, so that type of automation is known as extended automation, यानी जिसे normally आप flexible automation कहते हैं. So flexible automation is basically high level automation or extended type of automation. So high level automation में you will have all the parameters that are associated with the factory. They will be connected together, and all of those parameters or entities will be automated also. स्टोरेज फैसिलिटी से लेके जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, सो there are certain factories which have also automated the storage and retrieval system. सो स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम जो है वो बेसिकली आपकी जो इन्वेंट्री होती है वहाँ पे आपके पास होते हैं. सो यू हैव रोबोटिक आर्म्स ओवर देयर आल्सो. So whenever any part is needed by any equipment, so it simply passes on the signal to the storage and retrieval system. Normally हर एक पार्ट का अपने एक कोड होगा, so they will send in those information in terms of the codes. So it will read the code, it will detect the code, it will unload it from the shelf, it will place it on the conveyor system. The conveyor system will automatically move that particular part to the desired workstation. For example, इस workstation को चाहिए, so there will be again a loading and unloading station which will be of course an automated equipment. और अगर वो एक automated equipment है तो ज़ाहिर है वो एक robotic arm ही होगी, है ना, which will have the information of that particular part के ये part आएगा, and it will have to collect that part from the conveyor and place it onto the machine, load it onto the machine. So जितने भी यानी जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं विद इन द फैक्ट्री, अगर उसको आप ऑटोमेट करते हैं और फिर आपस में इंटीग्रेट भी करते हैं, तो वो आपका
हाई लेवल ऑटोमेशन या एक्सटेंडेड ऑटोमेशन जो है वो बन जाता है. So this is an animated figure which shows the flexible manufacturing system basically, so extended automation strategies hai. So normally you will be using some CAD system in the design shop, you know, और जब फाइनली आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है आफ्टर द एनालिसिस, सो यू सेंड इन दोज इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो नॉर्मली आपका प्रोसेस प्लान की फॉर्म में होती है. सो यू make the process plan and you execute that process plan for the prototyping. प्रोटोटाइप बन जाते हैं. वहाँ से जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि now the process plan is okay, so the central computer system then share those information to the lower level, which is the factory, in जो production line होगी या assembly line होगी, and according to those information the parts will automatically be unloaded from the shelves. They will be loaded onto the production line. The machines will automatically process that part, and finally it will be collected and will go back to the store section in the form of finished inventory. So all those components will be in the integrated form when you talk about the high level automation or extended automation. सो ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं तो आपके पास बेसिकली टू कैटेगरीज हैं. यू हैव टू कैटेगरीज: ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम. सो ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन द फैक्ट्री एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स. और ये दो कैटेगरीज जो है, ये दो लेवल्स जो हैं या दो डायरेक्शन जो है, दे will definitely be in the integrated form when we talk about the high level automations या flexible manufacturing system या computer integrated manufacturing की जब आप बात करते हैं, you know, so you will have an overlap of these two categories, जो manufacturing support system है और manufacturing system है. और वो इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है उसको नॉर्मली फिर हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. और उसका स्कोप जो है वो हमने डिस्कस किया था कि इफ़ बिजनेस फंक्शन इज़ आल्सो कंप्यूटराइज्ड एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड टू दैट सिस्टम, तो उसको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है. और अगर बिजनेस फंक्शन जो है वो मैनुअल है, वो कंप्यूटराइज्ड नहीं है, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड थ्रू अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैट से आप स्टार्ट लेते हैं, यानी जो डिज़ाइन प्रोसेस है वहाँ से आपकी ऑटोमेशन स्टार्ट होती है, तो फिर उसको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं. यू नो, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो आपके जहन में होना चाहिए सिम और एफएमएस में. सो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यू हैव विद इन अ प्रोडक्शन सिस्टम you have two directions in which you can go for any automation strategy: facilities और manufacturing support system. मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम में आपके पास ये फंक्शंस हैं. अगर बिजनेस फंक्शन भी कंप्यूटराइज्ड है आपका तो सिम होगा. अगर सिर्फ ये तीन सेक्शन जो है वो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं और वो अपर लेवल जो दूसरा लेवल है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, फैसिलिटीज़ का, उसके साथ लिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है, तो वो फिर एफएमएस होगा. अदरवाइज इट विल बी अ सिम if the business function is also an integral entity of those blocks. So मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फिर फर्दर आपके पास ऑटोमेशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी, बट ओवर देयर यू आल्सो हैव देन टू डायरेक्शंस: प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और डिस्क्रीट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग या सिंपली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी उसे कहते हैं. सो ओवरऑल जब आप फैक्ट्री लेवल पे ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ये तीन लेवल्स जो है, इट विल बी एन इंटीग्रल लेवल्स ऑफ एनी ऑटोमेटेड सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फील्ड लेवल. फील्ड लेवल मीन्स यानी आपका जो इंडिविजुअल इक्विपमेंट है उस लेवल से आप स्टार्ट करेंगे. सो यू विल हैव individual machines, individual equipments
दे विल बी ऑटोमेटेड. और वो ऑटोमेशन जो है वो कहाँ से आपको मिलेगी? दैट विल बी थ्रू द यूज़ ऑफ एक्चुएटर्स एंड मोटर्स. यानी वहाँ पे आपके पास मोटर्स और एक्चुएटर्स ही होंगे. एक्चुएटर्स जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसर्स हो सकते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ स्विचेस हो सकते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ टाइमर्स हो सकते हैं, ठीक है ना. और ज़ाहिर है ये स्विचेस और टाइमर्स जो है वो फिर किसी मैकेनिकल कंपोनेंट को मूव करने के लिए ही आप यूज़ कर रहे होंगे. सो मोटर टेक्नोलॉजी विल आल्सो बी अवेलेबल और हेयर. तो फील्ड लेवल ऑटोमेशन होगी आपके पास. फील्ड लेवल से जो है फिर आप जो है वो प्रोसेस लेवल पे चले जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस और ऑपरेशन की जब आप बात करते हैं तो फील्ड लेवल पे जो ऑटोमेशन है वहाँ पे आप इंडिविजुअल ऑपरेशंस बेसिकली ऑटोमेट करते हैं. सो यू विल हैव ऑपरेशन लेवल ऑटोमेशन. ऑपरेशन लेवल ऑटोमेशन को फील्ड लेवल ऑटोमेशन भी कहा जाता है. देन यू हैव प्रोसेस कंट्रोल लेवल. प्रोसेस कंट्रोल लेवल जो है वो फिर सेल की बात करता है. यानी यू हैव इंडिविजुअल मशीन्स एंड व्हेन यू group uh, two or more machines of similar family within a group, so it forms a manufacturing cell. अगर सेल लेवल पे आपके पास ऑटोमेशन हो, यानी यू इफ यू हैव फॉर एग्जांपल 3 or 4 similar machines and all of those machines are automated and you integrate them uh, within the cell. और सेल लेवल पे भी आपके पास एक होस्ट कंप्यूटर हो जिसके थ्रू आप ये 3 या 4 इक्विपमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहे हों, तो उसको फिर प्रोसेस लेवल ऑटोमेशन कहा जाता है. सो यू कैन हैव ऑपरेशन लेवल automation, then you have process level automation, and then the third level is the system level. So normally यही होता है कि हाई ऑर्डर कंट्रोल लेवल में कि you have individual machines. Those machines must be automated, and if they are automated, so you can group them in flexible manufacturing cells. तो फिर सेल लेवल की ऑटोमेशन आपके पास आ जाती है. और फिर अगर आपके पास 2 या 3 सेल्स हो एंड इफ दीज सेल्स आर ऑटोमेटेड, so you can also connect them together. So when you connect then multiple FMSs, FMCs, flexible manufacturing cells, so it will then constitute or form a flexible manufacturing system. So overall आपके पास एक सिस्टम होता है. देन विद इन द सिस्टम यू हैव सब सिस्टम्स और उन सब सिस्टम्स को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कहा जाता है. और फिर हर एक सेल में आपके पास इंडिविजुअल मशीन्स होंगी. सो ओवरऑल when you talk about FMS system or full-fledged automated system या computer integrated manufacturing system, तो उसमें at least you will have 3 levels of control. And when you are increasing the levels of control, this means that you are increasing the flexibility of that system. And for example, if you want to control, if you want to change, let us say, a program for certain operation, so you can individually go to that machine, you can change or edit that program at the machine level. You can go to the cell host computer. You can control or you can edit that program through the cell level host computer. And of course, you can edit or change that program through the centralized मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम जो आपके पास होता है, जिसका आप होस्ट कंप्यूटर कहते हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं. So basically, when you increase the level of control, this means that you are increasing the flexibility of the system. So within no time, you can edit or you can change the program for any individual operation, for individual equipment, or for any individual cell also. सो ये 3 बेसिक टाइप्स जो है आपके पास एक ऑटोमेशन प्रोडक्शन सिस्टम की जब आप बात करते हैं. एंड डेफिनेटली एज आई सेड दैट वी आर कंसर्न्ड विद द automated
मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी जो फैक्ट्री लेवल पे है हमारे पास ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज होंगी, वहाँ पे हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होगा. सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, so that you can easily understand.